Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we'll be discussing another form of educational technology, that is communication technology. As you are aware that we in the previous video we discussed information technology. Now we will try to understand what communication technology is all about. First, we will talk about this. What does communication mean? Communication means transferring or transmitting your ideas with one person or a group. Whatever you have, the knowledge you possess, the information you possess, when you transfer that information with your students, with your peer groups, with your family, with your friends, the process is called communication. Now, this is simply an idea of communication, but communication technology is different from communication. Communication technology refers to all those tools or systems used to create used to create, transmit, store, receive information in various formats like texts, like images, speech or audio, etc. So communication technology refers to all those tools which help us in creating. What do we mean by creating? For example, I am a teacher, I want to make a lecture, but a digital lecture. What is a digital lecture? Lecture like ebook is a digital platform. I will make a lecture, I will make a PowerPoint presentation. It is a digital format. I will use Excel sheet. I will use different sorts of images, cartoons, posters on the on with the help of a overhead projector or a laptop or a computer or simply a smartphone. So when I or when a person will be able to create this sort of thing, and then he will transmit the created material from his mind, from his tools and techniques to another person or a group, and then that information will be stored, and at the receiving end it will be received in an original manner. Original manner means you might be able to know what is digital signature, or you might have been able to know uh, the e-books. Those e-books written by an author, or or transmitted in the same original format to the person who reads them, or the sound or the music piece which is created by a musician, and then it is forwarded to another person or receiving it in an original format. So communication technology is a, is such a technology which uses tools, systems to transmit, store, and receive information, and then this information is passed on from one person to another person, from one person to a group. Is it clear? Okay. So the next point, the purpose of communication technology, as we discussed, the purpose of the purpose of communication technology is to convert, ख्याल रखिएगा, is to
convert information, is to convert information like text, जो मैंने कहा text, speech और audios, images वगैरह वगैरह in a transmittable, ख्याल रखिएगा, transmittable format, transmittable format or signal, transmittable format or signal, and then send it back to the person who is at the receiving end in the original form. What we discussed? The purpose of communication technology is to convert the information in the form of text, speeches, etc. huh, email also, huh, in a transmittable signal or format, huh, and then it is received by the person who is at the receiving end in an original form by using what? By using computer system. Computer is a system. It is not one single piece. As our body is a system of different organs, then it forms the whole body. Same is the thing with computers. Computer is not one single piece. It is an assembled thing which makes it a system. And then computers and smartphones. Smartphones and emails. Email is also related with internet. It is related with computer. It is related with mobile phone, and then it goes, because of these systems, when we convert information in the form of text वगैरह वगैरह, speech, audio, cartoons वगैरह, whatever we have to do, huh, and transmit, huh, transmit the format or the signal to the receiving end in the form of in the original form with the help of these gadgets. Now the thing is, why we are discussing it in a teacher has to exchange information. A teacher's job is that his message, the content which he is going to disseminate means which he is going to transfer from his mind to his or her students. It should mark an niche. It should be fixed in the mind of students. So teacher needs to improve his communication. In the modern era, teachers should be able to use all those gadgets. For example, right now, I am giving a lecture on YouTube, and you might be seeing a thing here, a microphone. This very thing adds to my communication, and we can say that I am using communication technology in order to exchange my views with my respected students, with my dear students, so that they will be able to understand the content in an original form. In a better way, they will be able to understand the content in a better way. So इसका हमारे इस वक्त टीचर्स की नीड क्या है? टीचर्स की नीड ये है कि वो जो पुराने डॉगमास थे कि टीचर आता था क्लासरूम में और बुक लेके पढ़ाता था, उस शाल से निकल के वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करे, ताकि उसका जो पढ़ाना है एक एक असर डाले, एक इन्फ्लुएंस करे, एक छाप डाले एक स्टूडेंट के माइंड में, उसके उसके माइंड में जो भी पढ़ा रहा है वो टीचर, जो भी वो he or she is teaching, student should be able to understand bit by bit
they should be able to understand the minute details of his content, his or her content. Is it clear? So एजुकेशन दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, जैसे हमने अभी इसको डिस्कस किया, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सर का हामिल है एक टीचर के लिए। अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे, टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, अगर हम जनरल हिसाब में देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हर जगह हमें यूज करनी, गैदरिंग्स हो, कोई भी चीज हो, जहां पे भी देखें आप टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे स्क्रीन रखे जाते हैं, अगर क्रिकेट मैच देखा होगा तो वहां पे बहुत बड़ा एक स्क्रीन होता है जहां पे सारा कुछ, और वो मैच जो है वो टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हुआ होता है। तो वो इंफॉर्मेशन ओरिजिन इन एन ओरिजिनल पीस हम सबके पास आती है। इज इट क्लियर? सो पहला जो पॉइंट जो है वो है स्पीड एंड इफिशिएंसी। स्पीड एंड इफिशिएंसी, यू नो, इंटरनेट की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो आनंद फानन में विदाउट सेकंड, विद इन सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स जो इंफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है, और एक इफिशिएंट मैनर में ये इंफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है इन एन इफिशिएंट मैनर। स्पीड, मैंने अभी कोई चीज बनाई, मैं अभी डालूंगा, ये पहुंच जाएगी दुनिया के हर एक कोने में। दूसरा जो है वो है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, यू नो, इट इज ग्लोबल। हम बार बार कहते हैं वर्ल्ड इट इज अ ग्लोबल विलेज नाउ, वर्ल्ड हैज श्रंकन। जो भी कहीं पे हो जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थ्रू आउट वर्ल्ड, कि कहां पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, हम उस चीज का हम अपनी कंट्री इंडिया में उसका प्रयोग कर सकें। सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ग्लोबली, इट कनेक्ट्स द ग्लोब। यू आर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन हियर इन, जैसे इस वक्त जो वीडियो बन रहा है ये कभी कहीं पे भी पहुंच सकता है, किसी भी कंट्री में कोई भी देख सकता है, वो बिकॉज देयर इज नो बैरियर, कम्युनिकेशन के लिए कोई बैरियर ही नहीं। इज इट क्लियर? उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम कम्युनिकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। What do you mean by processing? We can create information and we can make it more and more. मिसाल के तौर पर मैं लेक्चर बना रहा हूं, समझिएगा, उसमें मुझे कोई वीडियो की जरूरत है। Nowadays it is not a big deal to insert a video in my lesson, to insert a poster, insert a audio, a speech of a great educationist. So we can process the information according to the needs of the students. It is always a teacher has to cater the needs of his students. Okay. उसके बाद जो है वो है डिजिटल फॉर्मेट या डिजिटल फॉर्मेटिंग हम कहेंगे। जो आजकल के जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल होते हैं, मैंने बहुत सारी चीजों का अभी कहा, ई बुक्स हैं, बहुत सारे जैसे डिजिटल सिग्नेचर है, फोटो कैप्चर है, जीपीएस लोकेशन, सारी चीजें जो है ये डिजिटल फॉर्मेट है। हम आमतौर पे जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं वहां पे राइट नाउ हमें डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है? वो तो डिजिटल फॉर्मेट होता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें सेंड करना होता है, किसी को रिसीव करना होता है, हम वो डिजिटल फॉर्मेट में करते हैं इन एन इफिशिएंट मैनर एंड इन एन एक्यूरेट, एंड उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता।
उसके बाद सबसे बड़ा जो है वो है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। ये हमने कल भी ये पॉइंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा, उसमें हमने एनी टाइम एनी वायर कहा। एक्सेसिबिलिटी मींस कहीं पे भी आप बैठे हो, किसी भी टाइम, रात के 2 बजे हो, आपको कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन जस्ट सर्फ ऑन गूगल और अदर प्लेटफॉर्म्स, विकिपीडिया इज आल्सो देयर। You are sitting, you are traveling, you are in a car, you are chatting with anybody, you can retrieve information at any time, anywhere. So communication technology refers to, अगर मैं टीचिंग लर्निंग के हिसाब से बोलूं, it means how a teacher can make his communication more effective by using by using different gadgets, modern gadgets, in order to augment his teaching learning process. I hope you might have understood. If you like the video, comment, share, like, and give positive suggestions for improvement. Thank you very much.